Very good morning, everybody. Now we are going to start with our first chapter, Living World, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ principles and basic constructions of how we study. Being, if you are someone who wants to inquire about something which is not available, कुछ चीज़ें जो हमारे आजू बाजू नहीं हैं तो उनके बारे में हम कैसे स्टडी करते हैं, कुछ चीज़ें को कैसे प्रिजर्व करते हैं, तो कौन कौन से तरीके होते हैं, ये सारे हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे. वील अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द की एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ पार्क. Why do we need to have museum in our society? Why do we have to have a zoology park? So basically, as we are in the COVID era wherein we have to follow certain rules, for this year you are not going to have certain topics. So I'm just going to discuss with you the first chapter and what all topics you don't have to study for this year. That would be, you will be learning, आप अपने पेंसिल से टिक कर सकते हैं, basic principles of life. So what is a basic principle? How do you know कि ये living है और ये non living है? So you should understand certain principles are there. 6 characteristics है जो कि decide करता है. सबसे पहला characteristics है metabolic reaction. मतलब reaction अगर हमारी body में हो रहा है, that is giving rise to energy. So reactions would be two types. One is breaking and another is joining. Catabolism means breaking, anabolism is joining. So the second principle for understanding living and non living, it is the growth. अगर एक बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है, लेकिन ग्रोथ की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड ग्रोथ होगी. ऐसा नहीं होता कि आप पैदा हुए तो सिर्फ आपकी हाथ की लंबाई बढ़ती जा रही है. अगर आप देखोगे सिमेट्री के हिसाब से यू आर ग्रोइंग वेल, राइट. यू आर नॉट जस्ट ग्रोइंग फ्रॉम वन साइड. ऐसा होता है कि आप एक ही साइड से ग्रो कर रहे हो, नहीं, आप फुली कम्प्लीटली सिमेट्रिकली ग्रो कर रहे हो. तो इसीलिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस, राइट. अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ये जो आपके सामने है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ डेजर्ट एरिया. यहाँ पे भी ग्रोथ है. शुरू में एक छोटा सा पहाड़ था, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ और थोड़ा हुआ. सो स्लोली इट हैज़ रीच दिस हाइट. दिस वाज द लेवल. यहाँ से तो कुछ यहाँ पे ग्रो हुआ है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ, राइट. बट इस ग्रोथ से क्या आप बोल सकते हैं कि ये जो माउंटेन है, छोटा सा सैंड ड्यून बोल सकते हैं इसको, बोल्स्टर बोल सकते हैं, माउंट्स बोल सकते हैं, ये क्या लिविंग है कि नॉन लिविंग है? इट इज़ नॉट लिविंग, इट इज़ नॉन लिविंग, राइट. तो इस ग्रोथ को हम अपनी ग्रोथ के साथ कंपेयर करेंगे. व्हाट इज़ द वर्ड वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? इट इज़ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड growth. Okay, so you should know growth can be simple growth also. Just accumulation can also be growth. हमारी जो पहाड़ें बनी है वो भी accumulation of the lithosphere होती है, right. So but that doesn't mean those mountains are living beings. So next is our third principle, or we can remember as third important principle, that's aging. When you're growing as a human being, you have to age also. So third point of principle, first, ये बहुत important question है, आपको मालूम होना चाहिए. First point is metabolic reaction happens. हर एक क्लास के बाद you will be submitting in written homework. जो पढ़ाया गया है उसके ही नोट्स आपके बायो के नोटबुक में लिख के आप फ़ोटो क्लिक करेंगे and you're going to send it to us individually. You cannot send it in the group, you have to send it individually. Okay, so first question आप लिखोगे. पहले first question just miss. First question is, what are the components of the earth? Biotic and abiotic, मतलब living and non-living. Then second question is, what is the basic principle of life? One, metabolism occurs with catabolism and anabolism. Second, there is growth and the growth is well orchestrated.
एंड अगर एग्ज़ाम में इसी के अंदर से एक और क्वेश्चन आ सकता है, बहुत क्वेश्चंस हैं, सो यू शुड नो हाउ टू मेक क्वेश्चन। इसके अंदर से क्या क्वेश्चन आएगा भाई, अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था सैंड बोल्स के या सैंड माउंट्स के, सैंड माउंट्स भी तो ग्रो कर रहा है, तो उसको हम क्यों नहीं लिविंग बोलते हैं? तो आंसर क्या लिखोगे आप कि जो सैंड माउंट्स का ग्रोथ है वो अनइवन है, क्योंकि सेंटर में ज़्यादा है, यहाँ कम है, अनइवन है, राइट? लेकिन जो लिविंग बीइंग का ग्रोथ है इट इज़ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड. सो दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन, रिमेंबर. नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल, that after the growth is happening there is something that has to happen is aging. Body has a lifetime, you know, एक लाइफ स्पैन होता है जिसके बाद वो सिस्टम का काम करना स्लो हो जाता है. सो उससे क्या होता है, वो इंसान और ऑर्गेनिज्म ओल्ड होने लग जाता है धीरे धीरे. फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, धीरे धीरे जैसे ही वो ओल्ड होता है सेल का काम करना, इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, एंड दैट ऑल्सो कॉजेज टू द पॉइंट नंबर ई, नॉट डी, death of the organism. So this is an important point. So 1, 2, 3, 4 points are clear, and see the D point. What exactly happens when you are growing? It's important to produce your own young ones. Why is it important? So that the race can be continued, right? So the very important characteristics is reproduction. So it is an reproduction that is considered to be an important process. If there is no continuity of race, then the race will extinguish. So that you have to remember when you are talking about some example. अब यहाँ पे भी exceptions हैं, exceptions के नाम दे के question आ सकता है. mules and worker bee ये reproduce नहीं करते, लेकिन still they are living. So these are exceptions, okay? So if a question comes, then make sure you write these are exceptions, but living organism always reproduce young ones. Then the last important characteristics, this is the star of this topic, that is the main principle of life. कई बार आता है question, what is the main principle? अब अगर आप बैठे हो जिस रूम में, वहाँ पे अचानक से you find one you know fire, okay? So what will you do? Will you go into the fire? You will try to extinguish the fire, right? आप उसको बुझाओगे, और अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उस जगह से बाहर निकलोगे. तो ये एक रिस्पॉन्स था आपका, राइट? एक सिचुएशन को देख के या तो आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश, अगर नहीं हो रहा कंट्रोल तो आप उसे एक्सटिंग्विश करोगे. अनदर एग्जाम्पल, यू हैव मे बी snake inside your house. What do? Looking at the snake, okay, if you are a snake charmer, maybe you will hold it, you will take it out and throw it, but as a normal human being, snake देखते ही you're going to shift your place, वहाँ से भाग जाओगे. So that is your response. So this is the very important point, that is the sixth point. Any living being responds to thermal, आपका reaction, okay? रिएक्शन कितना ज़रूरी है, आपको लिविंग रखने के लिए रिएक्शन बहुत ज़रूरी है. सो योर रिस्पॉन्स टू द thermal means heat, chemical, there is any chemical changes in the environment or biological changes in the environment, this is the unique property of living. इसके वजह से आप alive हो. You know which situation is safe, which situation is not safe, right? आप बाइक चला रहे हो, सामने से ट्रक आया, तो यू डोंट गो एंड बैंग टू द ट्रक, राइट? आप साइड में दोगे, गैप दो, यू नो, अगर जगह नहीं है तो भी आप अपने आप को साइड में रख के एडजस्ट करोगे, राइट? ऐसा नहीं है ना कि जगह नहीं है चलो ट्रक को जाके यू गोना हिट. नो, you know, if you go and hit the truck, you will not be there anymore. So response to the environment is the very unique. ये question बहुत बारी आता है, which is an inclusive characteristics. Okay, so this question you have to attempt. Which feature in living being is an inclusive characteristics of life? I really wanted to start with Zoom class, but unfortunately I didn't find participants, so I'm just making this video for you to just go through it. Okay,
अब हमारे एनवायरनमेंट में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी एनवायरनमेंट इट इज़ मेड अप ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स बहुत वैरायटी होता है ऑर्गेनिज्म में. अगर आप देखोगे कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ अलग ही टाइप के. हर एक ऑर्गेनिज्म दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स.